So, a very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. we are having this static GK quiz or discussion where we discuss the conceptual understanding of the questions and the concept related with the Constitution. Am I audible, visible? Is my voice clear? The concept related with? Yes. Okay. Yes, good evening. Salutation, namaste. Welcome to the class. I think मेरी आवाज आ रही होगी है ना? हाँ. Yes, I'm fine. आप लोग बताइए. So basically, we were here somewhere, right? पिछले Yes, we were talking about it, and Raj Sabha happens with open ballot. ठीक है. And the other ones happens with secret ballot. ये वीडियो फ्रोज हो गया था क्या बीच में? Is it fine now? No, I think there were some issues. Is it fine? Is it fine? Okay, fine. Chalo. So let us begin with the next question. And the next question is question number. हाँ, इससे पहले वाला था जो 233 plus 12 we have done. Raj Sabha 245 seats, etc. है ना? Let us begin with the next question. That is question number 7. Which among the following amendments to the Constitution designated Delhi as National Capital Territory? So basically, all these things, the governance of the Delhi deals with this amendment. It inserted a specific article also. What is that article? Yes, 69th Amendment, which happens in 1990s, है ना? 92, 93 के आसपास की बात है. Which article was inserted by 69th Amendment, which governs the Delhi? The constitutional arrangement regarding governance of Delhi is drawn from this article of the Constitution. Yes, Vanisha, you're right. Article 239, capital A, capital A. ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है? Do not write small a because that has something else meaning, है ना? है ना? It was enforced in 1991. Okay, so basically this actually tells the setup. What is the setup of Delhi administration? So the setup is we are having chief minister and we are having LG, what we call it as lieutenant governor. Okay. Now please tell me who is having the power of police? Who controls the police? Chief minister or lieutenant governor in Delhi? ये सब बताया हुआ. I have told you all these concepts. So that's why I'm asking. Yes. देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी. यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन टेरिटरी? सो यूनियन टेरिटरी मींस यूनियन टेरिटरी, केंद्र सरकार की टेरिटरी है. ओके. सो ideally speaking, if there is no chief minister, ideally speaking, all the powers are everything is controlled by the union. However, with 69th Amendment, like some powers were given to the chief ministers. But please remember, in all the union territory, the police will be always in the hand of union government, which will control the police by appointing a lieutenant governor or an administrator. So basically, lieutenant governor police controls police, of course, on the advice of Union Home Ministry. He works in this regard. Okay. So अगर lieutenant governor लिखा है, mark that. If it is written Union Home Ministry, mark that. Okay. So police जो है, Delhi police is not controlled by the chief minister. You have to be very crystal clear. So basically, there are three things: public order, police, and land. ये तीन चीज. ठीक है. सो पब्लिक ऑर्डर पुलिस क्लोज चीज होता है, एक ही वेरी सिमिलर होता है नेचर में. सो ये दीज थ्री थिंग्स आर एक्चुअली इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हु वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.
So these three are not controlled by the chief minister of Delhi. You have to be very crystal clear on this. For example, let's say land. जैसे मान लो किसी ने illegal घर बना लिया. Let's say somebody has made an illegal home on the Delhi government's, है ना? So territory. So basically, it is the union government can come and like has the power regarding what we call it as removing those houses or anti-encroachment right? So all these things, public order, police, and land, these three things are controlled by the central government. And please remember, in all the union territory, the police is actually in the hand of union. It says union, so union government. This has to be very crystal clear. Okay? That is actually the main genesis, the main basis of the difference of union territory and state, that the police will be controlled by union government in case of union territory, whereas in the case of state, the police is controlled by the chief minister. This is the main difference between union territory and state. Okay? States may, for example, state of Maharashtra, who will be controlling the police? The chief ministers and the home minister of that state, right? Similarly, let's say Uttar Pradesh. So the chief minister of Uttar Pradesh will be controlling the police, right? But not in case of union territory. It is controlled by the union home ministry by appointing it their administrator or lieutenant governor. But of course, for all practical purpose, it is controlled by union home ministry. One more thing you have to be very crystal clear. If a central force is deployed, that's a different matter. For example, let's say a CISF is deployed in the state of, let's say in Bihar, we are having election. In that case, now the Bihar chief minister is not controlling it, right? So you have to understand it. So if the central forces are deployed in some states, then in that case, the central forces are controlled by the central government. So this has to be very crystal clear. Why there case of unease? Yes, Krishi Sasdeva, there are a lot of debates and lot of articles were written regarding it, that whenever there is a different political parties in center and the state, there are generally frictions. Yes, you're right. Why का कोई reason नहीं है, political disputes you can say is the answer. हाँ वही मैं बता रहा हूँ. अगर सेंट्रल जैसे CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, BSF, CRPF, ITBP, if these are deployed, है ना, in some states, then these are controlled by the central government. Don't say कि यहाँ पर Is it okay now? Or is it still stuck? Or is it still stuck? पता नहीं, कभी कभी हो जाता है. There are things which are not in my hand. ठीक है. So we are talking about, in general, in a state, the police is controlled by the chief minister or the state government. But if a central force is deployed in the state, then of course the central government will be controlling it. Or let's say a military army is deployed, then of course central government will be controlling it. So this has to be very crystal clear. ठीक है. So ये concept समझ में आ गया. Delhi का setup है. There is a chief minister and there is a lieutenant governor. So chief minister is elected by, so MLAs choose them, है ना. So it means we are having Delhi Legislative Assembly. ठीक है. So how many seats are there in Delhi Legislative Assembly? We have seen election, I think in February this year. How many seats are there in Delhi Legislative Assembly? $70 seats. So if you want to make your chief minister, you need to have you have to cross the half mark. So half mark is 35. So you need at least 36 MLAs to have your chief minister, right? And of course, the current BJP government has. Okay. Not 35, you need 36. You have to cross the half mark. Then you can make your chief minister, right? That is what you should be knowing about.
Okay, and maximum strength of the how many ministers can be there in Delhi government? So it is actually 10% of the total seats. 10% of 70 is 7. So maximum in Delhi, maximum ministers, including the chief minister, can be 7. It means CM plus 6 ministers can be there maximum in Delhi. And what is the case at central level? How much you in union ministry? This we have discussed it. Maximum number of ministers कितने हो सकते हैं? If you watch my class, just go and search on YouTube important ministers and ministry career launcher. You will get a video where I've discussed about the different types of ministers, cabinet minister, minister of state, etc. And I've discussed there also. Yes, 15% of what? क्या चीज का 50%? 15%. Yes, Krishi Sasdeva, Ishita, you have answered it, but partially. 91st amendment, right? 15% of what? किसका 15% मैं निकालूं? Total. Which total? Should I add both Lok Sabha, Raj Sabha? किसकी बात कर रहे हैं? Yes, Ishita, you're right. 15% of the strength of Lok Sabha, which actually is 543. Okay, so 15% of 543, 15 by 100 into 543 निकालोगे. I think 82 के आसपास आता है. 81, 82. Please check it. So maximum strength can be there. Yes, Kushagra, I have noted your point. ठीक है. देखता हूँ अगर if possible, I will schedule a class regarding it. देखता हूँ. यानी तो फिर 3 PM वाली क्लास में मैं if I got the chance. ठीक है. So we were talking about it. Now one more question I want to ask. If somebody will ask you what is the capital of India, just wanted to know. And I have given two options. One is New Delhi, the other is Delhi. What should be the answer? What should be your answer? Think and answer. Please don't. The answer is actually on your screen. Because we have been taught in the school days that New Delhi is the capital. The answer is, अच्छा मैं पूछता हूँ, who is the chief minister of Delhi? Who is the current chief minister of Delhi? Please answer this question. पहले ये बताओ, चीफ रेखा गुप्ता जी है ना, इससे पहले थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, राइट? शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली? दिल्ली की सीएम है कि सिर्फ न्यू दिल्ली की सीएम है? आतिशी वाज देयर बिफोर दैट. हाँ, 2 months के लिए थी. हाँ, प्रीवियस बिफोर दैट वाज केजरीवाल, राइट? हाँ, शी इज द सीएम ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली ओनली? दिल्ली, इट मींस बोथ. She is the CM of National Capital Territory, the entire Delhi, right? Delhi is the National Capital Territory. So the answer is this, not this. ठीक है? The problem is whenever we read actually the newspapers or somewhere, तो हर जगह लिखा था New Delhi, New Delhi. Foreign policy में तो और New Delhi word लिखते हैं. But please be careful. When you are saying New Delhi capital, Old Delhi वाला ऐसा नहीं है. ऐसा थोड़ी था. Delhi, the entire Delhi is National Capital Territory. Okay? Please do not get confused with NCR. This is a different term. National Capital Region includes, I think there are 23 other districts from other states. Let's say from UP, Haryana also. So NCR is a different term and NCT is the capital. National Capital Territory, Delhi is the capital of India. So ideally it is not correct to use the word New Delhi. The answer is Delhi is the capital of India. ठीक है? Although in common parlance हम लोग बोल देते हैं New Delhi is the capital, etc. But मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए. So you have to be careful. This is NCT, Delhi, which is controlled by like chief minister and lieutenant governors are there. National Capital Region जब आप लिखते हो NCR, so it includes Delhi plus I think as far as I remember 23 districts. इसमें नोएडा वगैरह सब आ जाते हैं. And नोएडा, गाजियाबाद, and Noida, this is in UP. This is in UP administration. Similarly, I think some Haryana and other districts also. So national capital region जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, एनसीटी होता है.
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर क्यों बनाया गया, प्लीज फाइंड आउट, आई मीन आई नीड टू सर्च फॉर दिस, व्हाई द कॉन्सेप्ट एनसीआर हैज बीन मेड, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीटी दिल्ली इज देयर व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट्स आर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो बहुत आसान है, होपफुली। हाँ, द राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी इज द राइट आंसर, यस। न्यू दिल्ली का यूज जो है ना डिप्लोमेसी में किया जाता है, क्लैट एस्पिरेंट। जैसे क्या होता है, जैसे कई बार जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह सब में जितने भी ऑफिसर्स है न्यू दिल्ली में, तो उसको न्यू दिल्ली लिखा आता है फॉरेन पॉलिसी में, तो इतना फेमस हो गया है कि कैपिटल न्यू दिल्ली एड्रेस किया था। सचिदानंद सिन्हा वाज नॉट चेयरमैन। ये पूछा जा रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछा जा रहा है, ठीक है। सचिदानंद सिन्हा जो थे ना टेम्परेरी चेयरमैन थे, इंटरिम प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मैं पूछूं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, सो दैट वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एससीएफ मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से बिलोंग करते थे। उसके बाद सो फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन वाज सचिदानंद सिन्हा, एंड फ्यू डेज लेटर लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट। टेम्परेरी चेयरमैन या इंटरिम प्रेसिडेंट वगैरह भी कहीं कहीं पे लिख देते हैं। या पूछें हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द फर्स्ट सिटिंग, ऐसे मैंने देखा एक जगह एग्जाम पूछते हुए। सो फर्स्ट सिटिंग में जाहिर सी बात है जो टेम्परेरी चेयरमैन होंगे वही होंगे, ठीक है। सो दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। कहीं कहीं ये भी एनसीईआरटी की बुक में एक बार लिखा होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एक्सपर्ट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहते हैं टू इंडिया, बी एन राव, दैट इज आल्सो यू शुड बी नोइंग, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड आई होप दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर कोई इसकी पास्ट हिस्ट्री बता देगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, मेड इन 1215 इंग्लैंड, वेरी गुड कृषि सचदेव। हाँ, सो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली होता क्या है, देखो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। देखो होता क्या है, जनरली राइट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, राइट्स, दिस इज नॉट प्रिवेलेंट इन लाइक नॉट प्रिवेलेंट इन किंगशिप। किंगशिप में राइट्स वगैरह थोड़ी होता है, तो डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। सो बेसिकली देयर वर किंगशिप इन इंग्लैंड, बट in 1215 the king decided to give some rights to the citizen, and that were called as Magna Carta, ठीक है। why he decided to give is a different matter, उतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। so that's why 1215 में some sort of rights were given, और उसको मैच कराने के लिए और उसी चीज को याद करने के लिए, और whatever you can say to remember the same thing, the Magna Carta actually refers to the rights that are given to the Indian Constitution as well, fundamental rights। which part, कौन से पार्ट में मिलेगा आपको, which article to which article, ये भी बता दीजिए। हाँ, पार्ट 3। सो बेसिकली इट इज पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, है ना। वेरी गुड, हाँ गुड, 12 to 35 है, ठीक है। Let's move on to the next one. Which of the following articles of the Indian Constitution is called as heart and soul? Very important. This is a previous year question of multiple exams. Even AILET में ही पूछा हुआ है. And who said this? ये बात किसने कही, अब क्यों? What is the idea behind this? Article 32. What is Article 32? इसमें क्या लिखा हुआ है? Who said this? Right to constitutional remedies. Very good. Right to constitutional remedies. Said by Dr. Bhimrao Ambedkar. Acha, can anyone explain what is right to constitutional remedies? Imagine कि I am a new student and you have to explain me in one line. List rates issued by the Supreme Court, right? हाँ, ठीक है, rates होता है, ठीक है. But if I am a new student, let's say I am a new student, I've just started preparation. How will you explain what is the meaning of right to constitutional remedies? ठीक है, आप बोलोगे rates तो
हाँ, SC कैन, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वेरी गुड इशिता, कृषि सचदेवा, सब लोगों ने सही जवाब दिया. But this is for the one you are answering for the one who have knowledge about what is rates. How will you explain to common habeas corpus quo warranto mandamus certiorari prohibition? Very good. CLAT has been done. Protect fundamental right of people, right? Kushagra. हाँ. You have to answer if. हाँ, Shreyas Param, it allows citizen to approach Supreme Court if their fundamental rights are violated. ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. Yes, कुशाग्रा, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया. Like you all are answering it all the 5 writs. हाँ, so you have to answer it that if a common man is asking, if a layman, कि क्या होता है भाई, तो आपको ये बताना पड़ेगा. If your fundamental rights, there are 6 fundamental rights. The 6th one is this. So to protect the other 5 fundamental rights, if your 5 fundamental rights are violated, you can use the 6th one, that is Article 32, to go to the Supreme Court and protect your fundamental right. तो लोगों को कॉमन मैन को समझ में आ जाएगा. फिर आप बता सकते हो कि yes, for that the writ petition is filed and writ, there are 5 types of writs defined, etc. है ना. हाँ, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं 226 के अंदर, राइट. हाँ, so that is what you should be knowing. Yes. Okay. Let's move on to the next one. Freedom of speech and expression mentioned where? हाँ, Article 19. C is the right answer. अच्छा, right to dissent, freedom of press, है ना, freedom of making films, ये सब कहां से आएगा, कौन से आर्टिकल से आएगा? विच आर्टिकल? जितने भी फिल्म बनती है वो कौन से फंडामेंटल राइट से बनाई जाती है? यस, आर्टिकल 19, है ना. ये जो भी मीडिया के पास पावर है ना, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का, या जिसको भी, है ना, कोई भी फेलियर होती तो अगेन आर्टिकल 19, राइट टू डिसेंट, मतलब डिसएग्री विद द गवर्नमेंट, है ना, दैट इज आल्सो 19. तो इस सिंपल से, इसमें प्रोबेबली नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना 19(1)(a), राइट. वेरी गुड. नाउ द क्वेश्चन इज इट एब्सोल्यूट? ये मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पूछा था, है ना. इज इट एब्सोल्यूट? नो, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, आई गेस, बट इंडिया में तो नहीं, एटलीस्ट वी कैन से. व्हाई? व्हाट इज लाइक, इट हैज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. वेरी गुड. वेयर इट इज मेंशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है. नहीं तो आप बोले तो कोई गाली गलौज करने को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मान लिया जाएगा, है ना. तो ऑफ कोर्स किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी लाइक एब्सोल्यूट. You cannot speak whatever you want. There is some restriction, है ना, reasonable restriction. Where it is mentioned? The word reasonable restriction, exact word जो mention है Article 19 Clause 2 में, वो term mention है reasonable restriction. नाइनटीन क्लास 2, राइट. हाँ, और भी जगह, बट 19 क्लास 2 इज एक्चुअली द मेन वन, है ना. तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 19 में ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है. दिस इज वन थिंग. हाँ, कृषि सत्य, वेरी गुड. इसके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पढ़ोगे, सो दे हैव टॉक्ड अबाउट 8 टाइप्स ऑफ बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना. सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एटसेट्रा, है ना. सो 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर मेंशन्ड, है ना. उसके अलावा भी राइट टू असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, ठीक है ना. आर्टिकल 19 के अंदर ही सब आ रहा है. मूव टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं, इज दिस 19(1)(d) कॉमन से बताइए, कोई आपको पढ़ना नहीं है. इज दिस एब्सोल्यूट और ये वाला डी वाला? यस और नो? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इज इट एब्सोल्यूट? इफ नॉट, प्लीज टेल मी कहां पर नहीं. कोविड, यू कैन नॉट गो इनटू द अदर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट. कृषि सचदेवा, वो तो है ही. हाँ,
सब रिवर टेम्पर प्लस मिलिट्री, यस कुशाग्र, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, मान लो आपकी मिलिट्री हेडक्वार्टर है, तो थोड़ी कॉमन मैन को एंटर करने देंगे। आप जाओगे पार्लियामेंट में तो थोड़ी अलाउ करेंगे। सो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया के ये मतलब नहीं कि जहां मन चाहे चले जाए, बट यस देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स, है ना। इवन यू कैन नॉट गो इन सम अदर प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा दिए गए। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, इज इट? यस देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। बताओ, थिंक एंड आंसर। क्योंकि सिर्फ हमको आंसर नहीं कराना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ताकि आप कभी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों ऐसा मेंशन किया गया। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। There are some certain conditions, especially in tribal areas, where people of other regions cannot go. आपने सुना होगा इनर लाइन परमिट वगैरह लेना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट के सम स्टेट्स में। यू कैन नॉट बाई लैंड एवरीवेयर, ऐसा नहीं कहीं भी खरीद सकते हो जमीन। ऑफ कोर्स ये बात सही है कि बाई एंड लार्ज आप कहीं भी जा सकते हो, फाइन, बट यस देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू कैन नॉट बाई लैंड एटसेट्रा एंड ऑल, है ना। फॉरेस्ट एरियाज एंड बहुत सारे लॉस होते हैं, है ना। हाँ, so that is what it is. Last, to practice any profession or carry on any occupation, trade or business, इसमें है कि नहीं? हाँ, 370 से पहले कश्मीर में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन था लैंड खरीदने से रिलेटेड, एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में भी अभी भी है लैंड बाइंग से रिलेटेड। इसमें क्या एक्सेप्शन, मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है ऑफ कोर्स। तो आपको बताना है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो अपेरेंटली जब लाइन पढ़ोगे तो आपको एक्सट्रीम लग नहीं रहा, एनी प्रोफेशन, वो बात सही है, लेकिन एनी इसका एक्सेप्शन में जब आप पढ़ोगे 19 के नीचे जाओगे, 2, 3, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, दे हैव पुट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यू कैन नॉट बिकम मास डीलर विदाउट परमिट, राइट, वेरी गुड। चोरी चकारी थोड़ी कर सकते, यस ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल नो वन कैन से कि कोई बंदा वो ड्रग्स ट्रेड शुरू कर देगा, बोलेगा कि मेरा एनी प्रोफेशन है, नो, ऐसा थोड़ी होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और बताते हैं इवन ड्रग्स लगे, हम लेजिटिमेट बात बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कोई अगर इफ यू डू नॉट हैव एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री, यू कैन नॉट ओपन योर क्लिनिक, यस। तो आप ये नहीं कर मेरा मर्जी हम खोलें, लेकिन नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन, अदरवाइज यू विल किल पीपल। यू गॉट इट। सिमिलरली लॉयर के लिए भी एक जमाने में न्यूज आई थी, आज की बात नहीं, बहुत पहले की, 10-12 साल पहले की बात है, कि there reports that came that there are a lot of people who are practicing in the even in the high courts and they do not have law degree, ठीक है। तो of course practice any profession does not mean कि any profession, of course if you want to become if you are practicing law you need to have a law degree। आप फर्जी डिग्री बना के नहीं रह सकते, है ना, लॉयर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। so practice any profession has some restriction, है ना। when you read further articles 19 clause 2, 3, 4, 5, 6 you will realize this, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो मैं इस बैच इस क्लास में जो 8 बजे वाली क्लास होती है संडे को, इसमें सिर्फ आंसर नहीं बताता हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल, आई विल आंसर यू, तो फिर आपकी थिंकिंग पावर नहीं जनरेट होगी एग्जाम में कैसे सोचना है वाइड ब्रेन से, है ना। इसलिए आई ट्राई यू कि आप कोशिश करो, थिंक करो एंड आंसर करो, है ना। हो सकता है गलत तो कोई बात नहीं। Which of the following is considered as precursor? Precursor मतलब it was working similar to preamble but it was before the preamble. जो preamble काम कर रहा था वही काम रफली कर रहे थे, बस उससे पहले वो आया था ना। Objective resolution very famous है ना, so B is the right answer. So introduced by पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, December 30, 1946, ठीक है। अगर देखो लैंग्वेज भी समथिंग सिमिलर लग रही है, sovereign independent republic लग रहा है ना, और इसी तरह की लैंग्वेज लिखी होती है प्रीएम्बल में भी, है ना। थोड़ा सा चेंज किया गया था ऑफ कोर्स, तो रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, है ना, 1946 में, एंड पोस्टपोन अगेन ऑन इतना द रेजोल्यूशन प्रिंसिपल लेटर बिकेम द प्रीएम्बल। तो इसी टाइप की रफली डेमोक्रेटिक यूनियन होगा, हालांकि बहुत सारी चीज बाद में चेंज कर दी गई प्रीएम्बल बनाते वक्त, बट द आइडिया इज सेम। द नेक्स्ट इज दिस फॉलोइंग इज नॉट मेंशन प्रीएम्बल, आई होप दैट यू शुड बी आंसरिंग इट। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, डोमिनियन वर्ड नहीं मेंशन, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कई बार लिखा आता है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। सो ये सब कीवर्ड्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना, बिकॉज समटाइम्स दे आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई होप एन इजी क्वेश्चन। कुछ लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया, बट यस
Yes, 42nd amendment is also called as what? Also known as what? हाँ, socialist secular integrity. So B is the right answer. ठीक है, तो ये तीन वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी. ठीक है. हाँ, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. वेरी गुड, बिकॉज इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, है ना. सो दीज थ्री वर्ड्स were not originally present in the constitution, but it was added by 42nd amendment 1976. Okay, now I have one question. Ki after the addition of these three words, is there any practical changes in the implementation of constitution? Yes or no? एंड इंटीग्रिटी ऐड हो, बिकॉज एंड जो है ना वो स्पेसिफिक. हाँ, सो नो नथिंग इट्स जस्ट सिंबॉलिक. हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर इंटीग्रिटी के साथ एंड भी तो ऐड हुआ, बट वो एक्चुअली इसलिए कि वो सेंटेंस कनेक्टर है ना, इसीलिए उसको नहीं माना था. की वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. ठीक है, सो वी कॉल इट एज थ्री वर्ड्स, थ्री आइडियल्स वर एडेड. सो बेसिकली सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है ना, तो डीपीएसपी, पूरा डीपीएसपी तो सोशलिज्म ही है. So it was even before that. The idea was there. So Indian, है ना, social मतलब social, pro social, social justice जो provide करता है. यहाँ तो लिखा है social justice. ये तो secular here means treating people of all the religion equally. So it was there. Like Article 14, equality before law. Article 325, 326, people of all religion, irrespective of religion, race, caste, gender can vote. Article 25, etc. was there. And integrity, ऐसा थोड़ी कि integrity पहले नहीं थी. Integrity मतलब मजबूत, like all people, there should be integrity, it should not be broken, the country should not be broken, it should be like united. तो of course common sense is. ठीक है, तो this was actually symbolic in nature. इसका एक जगह स्टिक क्वेश्चन आया था. हाँ, it has no significance, no legal effect, ये लिखा होता है, no legal effect independently of other parts. This was asked in a very prominent government exam. ये उसका आंसर था ये. Which of the following is correct regarding preamble? So the answer was no legal effect independently of other parts. Does government have responsibility to safeguard religion in the sense ki safeguard in the sense ki people of all the religion? That should be the answer. है ना? है ना? Ensure harmony. ठीक है, ये आंसर होगा. नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स का मतलब ये है कि बाकी पार्ट्स में जो मेंशन है इसलिए वो उसका लीगल इफेक्ट है. अदरवाइज ये जो है ना पूरा एंटायर जो की वर्ड्स, ये सब वर्ड्स है, ये सिंबॉलिक मोर होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. द नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम वेयर. वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू ऑल शुड बी आंसरिंग. Yes, Bill of Rights, USA is the right answer. Yes, Krishi Sachdeva, that's the idea. So USA is the right answer, है ना. तो अच्छा, एक चीज और पूछने हैं. So we have taken a lot of things from USA. US में ना, US कब आजाद इंडिपेंडेंस हुआ? 4 जुलाई 1776 को जनरली. ठीक है, मान लो यहां से लेके टिल टुडे. अच्छा, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कितने हुए हैं? आई थिंक 27 28 के आसपास हुए हैं. लेट मी चेक इट, है ना. टोटल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. टोटल अमेंडमेंट इन यूएसए 27 as far as I remember. Yes. So यूएस में जो है ना सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए टिल नाउ. एंड इंडिया में कितने हुए? ये पूछा तभी एलेट में क्वेश्चन में आया था ना कि इंडिया में कितने? 104 है ना. कितना इंडिया टोटल? Let me check amendments. अभी तक कितना है? 106. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन, इंडिया तो बॉर्न हुआ 15 अगस्त 1947 को, और हम लोग 2025 में 106 अमेंडमेंट हो गए. यहां 27 हुआ. भाई इतना कम टाइम में इतना हो गया, इसमें इतना सारा टाइम में बहुत कम हुआ. भाई जस्ट अप्लाई द लॉजिक. बिना पढ़े बिना सर्च किए आंसर करना है. This is a common sense question which I am asking.
Our constitution is not rigid. Krishi Sachdeva, स्टेट रेटिफिकेशन इशिता, यस इशिता यू आर करेक्ट. हालांकि किसी केस में इंडिया में भी रिक्वायर्ड होता है, मैं बताता हूं. ठीक है, देखो आप ये कह सकते हो, प्लीज डू नॉट से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिजिड. देखो रिजिड मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू चेंज या डिफिकल्ट टू चेंज, जो भी कह लो, है ना. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिजिड, है ना, फ्लेक्सिबल मतलब जो आसानी से चेंज किया सके. बट एज कंपेयर टू यूएसए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेस रिजिड. इसको बहुत डिफिकल्ट है चेंज करना, बिकॉज यू नीड 2/3 परमिशन फ्रॉम स्टेट्स. Okay, in India a lot of things can be amended without permission of state. Certain कुछ चीजों में सिर्फ states का permission चाहिए होता, और वो भी half of the states से. Okay, for example, when you are impacting federal structure, then only you need permission from half of the legislature. For example, जैसे NJAC बनाया गया था, National Judicial Appointment Commission. So you are altering the Supreme Court and High Court judges appointment, 99th Amendment. In that case, half of the state were supposed to pass resolution. Similarly, GST, 101st Amendment, इसमें जरूरत थी half of the states की permission की. But US में 2/3 चाहिए होता है. Okay, and in all the cases, India में in all the cases you do not need. In only in few cases where there is a federal impact, in that case half of the states permission is required. हाँ, NJAC बंद कर दिया गया. Yes, CLAT aspirant, that was struck down by Supreme Court. Yes. हाँ, someone is writing holding together and putting together federation. Yes, Krishi Sachdeva. किसी ने बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस का मेरा एग्जाम है कल, तो बता देता हूँ. There is one called as putting together federation. ये पढ़ा है आपने पॉलिटिकल साइंस में? ये होता होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ना पुटिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल यूएस है ना, होल्डिंग टुगेदर इज इंडिया, है ना, 9th and 10th में. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेट रेटिफिकेशन? कृषि सचदेवा, प्लीज ओपन आर्टिकल 368. यू विल सी, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड कीजिएगा, which chapter and which article. When you change, you have to actually basically take permission from half of the states. ठीक है, so here the right answer. I hope you got the concept. A is the right answer to this question. अगर मौका मिलेगा तो मैं ये दिखा दूंगा क्लास में. Let me देखते हैं अगर ऐड हो सकता है स्लाइड में, if possible I'll show. Just hold on. आप सर्च करना ना. Just hold on for 1 minute. I'll show. ये पढ़िए, देखिए, दिस इज आर्टिकल 368 which talks about constitutional amendment, power to amend the constitution, right? अब यहां पढ़िए, provided that if such amendment seeks to make any change in article 54, 55 president से related, 73 chapter 4 part 5 जुडिशरी से रिलेटेड, ये सब इसको पढ़िए खोल के. आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऐप डाउनलोड कीजिए और जाइए चैप्टर 4 पार्ट 5 देखिए क्या है. चैप्टर 5 पार्ट 6 अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है. लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? बिकॉज फर्स्ट यू चेंज दिस एंड देन यू विल चेंज द एंटायर. तो अगर आपको आर्टिकल 368 को भी अमेंड करना है तो भी हाफ ऑफ द स्टेट्स यू नीड परमिशन ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, इज इट क्लियर? If these things are getting affected, then you need permission from half of the states. Otherwise, it is not required. The parliament itself is enough to amend the constitution. Is it clear? अब जाके पढ़िएगा, देखिए ना आर्टिकल 54 में क्या लिखा. 55 प्रेसिडेंट से रिलेटेड एज फार एज रिमेंबर, सेंट्रल, है ना. ये सब में से किसी एक जो है जुडिशरी से रिलेटेड है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 124 वगैरह यहीं पर आता है. सो इफ यू आर, तो एनजैक जब अमेंड किया गया तो यू आर अमेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सो यू नीड परमिशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स.
सिमिलरली ऑफ कोर्स जैसे जीएसटी, तो जीएसटी में तो बहुत कुछ अमेंड किया गया, तो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर ही को इम्पैक्ट कर रहा है ना? दैट इज हाउ इट इज. ओके, सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर. आई होप आप लोग को इस क्लास से काफी बेनिफिट मिलते होगा, उम्मीद करते हैं, है ना? सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई विल बी मीटिंग यू टुमारो एट 3 PM. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग. ओके, वी आर स्टार्टिंग अ सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन सीरीज. ठीक है, नेक्स्ट वीक से, मतलब कल मंडे से एक तरह का रिवीजन शुरू होगा 3 बजे. ठीक है, सो आप देखिएगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक क्लास में एक टॉपिक टाइप समथिंग कवर हो जाए. So if you have not subscribed, please subscribe to the channel and try to join the live class tomorrow 3 PM. Thank you everyone. Thanks for watching.